All right. So we were at Simpsons. And this was the formula which Simpson had derived. So this becomes the base formula. Now, basis this, Simpson devised a set of rules. So, rule number one. रूल नंबर वन में सिम्पसन ने कहा कि area is given by a formula h by 3 into SOP. इसने ये रूल नंबर वन का फॉर्मूला को he created it. So if you compare this formula to the base formula, then what is the value of K? 1/3. 1/3. 1 by 3. So K is 1 by 3. Then he created something called as Simpson's multipliers. He created something called as Simpson's multipliers. So he said, n को काउंट करो और उसके बेसिस पे सिम्पसन मल्टीप्लायर डालो. So for rule number one, he said n will be greater than equal to 3, then 5, 7, 9, etc. That means all odd numbers. तो अगर आपने आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप गिनती करोगे, राइट? जैसे ही आपने देखा ऑड नंबर है 3 से चालू होता हुआ, तो इसका मतलब है रूल नंबर 1 लागू हो जाएगा उस पर. एंड रूल नंबर 1 लगेगा मतलब फॉर्मूला ये रहा h by 3 into SOP. ये फॉर्मूला है उसका. So he said कि ऑर्डिनेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो बाय अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड सिम्पसन मल्टीप्लायर. So for n equals to 3, he gave Simpson multipliers as 1, 4, 1. For n equals to 5, he gave Simpson multiplier as 1, 4, 2, 4, 1. पहला और आखिरी 1 होगा, दूसरा हमेशा 4 होगा, उसके बाद 2, 4, 2, 4. पहला और आखिरी 1, दूसरा 4, तीसरा चौथा 2, 4, पांचवा छठा फिर 2, 4. And like this the chain would go on. That means you are forming a chain of 2, 4, 2, 4, 2, 4. और ये सिम्पसन मल्टीप्लायर्स जो हैं आपके जो ऑर्डिनेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होंगे ये कांस्टेंट वैल्यू से. Sir, ये K is always equal to 1/3 for rule number 1. For rule number 1. Okay, sir. And the multiplier is multiplied with what, sir? अभी जो आपने बोला? Multiplier is multiplied with the ordinate, with the breadth. With the breadth. जो वो फ्रेम है ना सर? जो फ्रेम था ना, जो फ्रेम पे जो ब्रेड थी. ओके सर. तो ऑर्डिनेट थे ना सर, वही ना? वही ऑर्डिनेट थे, जो बिल्कुल ठीक, जो ऑर्डिनेट थे उससे मल्टीप्लाई होगा. सो बेसिकली जब भी ऑड नंबर होगा तो आप रूल नंबर 1 लगाओगे. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ठीक है, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. लेट अस
ये 1 3 नहीं होता ना सर, 3 5 से शुरू होता है हमेशा। ये 3 से शुरू होता है, ग्रेटर देन 3। ओके ठीक है, लेट्स कम टू एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 1। देन ये क्लियर हो जाएगा अभी, इट विल ऑल बिकम वेरी क्लियर। सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ बोट कवर 10 meters long, so length is 10 meters. If the breadths at equal interval from forward are as follows: 0, these are the breadths, 2.25, 3, 2.25 and 0. So सबसे पहले आप गिनती करोगे, n कितना है? How much is n? 5 1 2 3 4 5. 5 मतलब ऑड नंबर, कौन सा रूल लागू होगा? रूल 1 Rule number 1 लागू होगा. So n is equal to 5. Can you tell me the value of h? सर 2.5 2.5. So is h okay with everyone? Yes, sir. Okay. मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो this is the aft perpendicular, this is the forward perpendicular. सबसे पहले it is equal interval from forward, so forward is 0. Then next is 2.25, this is 2.25. Next is 3, port to starboard. Next is again 2.25. And last is 0. Now you join them. सर ये जो 3 and 2.25 है ये एक्चुअली है क्या सर, ये द डिस्टेंस? This is the distance from port to starboard or starboard to port. This is the breadth. ब्रेथ एट दैट पॉइंट ना सर। This is the breadth at that point, at that frame number. Okay, so the breadth of the boat at that point is 2.25 and 3 and 2.25. Correct, absolutely right. And this is 0 at the ends. Okay sir, okay. The actual boat is down below. इसके नीचे है, ये बोट का कवर बन रहा है. हाँ 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 सर, समझ गया. ये एक्चुअल बोट नीचे है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बोट. ओके, सो उसको मैं बना ही नहीं रहा हूं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. द कवर ऑफ द बोट इज बीइंग मेड. वाटर प्लेन एरिया सर. तो हमें ये सर मेजरमेंट Basically, करके water बनाना plane पड़ेगा area. पूरा ये स्केल पे, ये डायग्राम जो बनाया सर आपने. रफ इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा. ओके वी वोंट हैव दैट मच टाइम, सो ये रफ बनेगा. ठीक है. यस सर. तो नाउ दिस डायग्राम जो हमने बनाया है, दिस इज ऑल्सो वी कॉमनली कॉल इट एज अ फिश डायग्राम बिकॉज इट रिजेंबल्स अ काइंड ऑफ अ फिश. तो इसको फिश डायग्राम भी कहते हैं.
और सर ये इस जो डायग्राम लेंथ आपने लिया है 10 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द बोट कवर। तो जिस चीज का सर, अगर बोट लेंथ वाज एक्चुअली 20 मीटर लेकिन हमको कवर सिर्फ 10 मीटर का बनाना होता तो भी हमको सिर्फ 10 मीटर लेना होता ना सर। इट्स नॉट नहीं, फिर वो कहानी अलग हो जाती है ना। अगर आप अगर बोट 20 मीटर की है और कवर आप 10 मीटर का बनाना चाहते हो, तो मतलब आप क्यों मतलब आइडियाज मत दो। नहीं नहीं सर, ठीक है okay. वो जैसे वो एल जो एच निकालने के लिए जो एल हम यूज कर रहे हैं, सो हाँ ओनली फॉर दैट। हाँ, नहीं तो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं आजकल, तो मत आइडियाज दो। सो अब टेबल बनाएंगे। सो title of the first column will be the same as whatever is given in the question. So breadths from forward. Everything should remain the same. This is nothing but your ordinator. Your first column is nothing but your ordinate. That is breadths from forward. Same रखना जो question में दिया है, उसको बदलना मत. 0, 2.25, 3.0, 2.25 and 0. सर सेम रखने का मतलब है सर उसका नेमिंग जो सर क्वेश्चन में दिया है। Same naming and order. ओके, Naming and order वो सेम रखना. Okay. Title of the second column, Simpson multiplier. नेमिंग मतलब सर जैसे फॉरवर्ड से दिया तो फॉरवर्ड से। नेमिंग मतलब फॉरवर्ड से दिया तो फॉरवर्ड से, आफ्ट से दिया तो आफ्ट. ठीक है सर। First and last is always 1. Second is always 4. And then you in between you have 2 4 2 4. अगर सपोजिंग 7 होते तो फिर एक 2 4 और आ जाता. 9 होते फिर एक और 2 4 आ जाता. 11 होते फिर एक और 2 4 आ जाता. दैट इज द मीनिंग. ठीक है, इज दैट ओके? Is that okay? यस सर। यस सर। Title of the third column, area function. Multiply column number 1 with column number 2 to give you column number 3. इनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर सबको ऐड कर दो. इन सबको ऐड कर दो. एंड थर्ड कॉलम का टाइटल है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. और मुझे एसओपी का टोटल बताओ. $26. Everybody is getting the same answer? यस सर। Okay. SOP is 26. So now WPA is equal to अरे 24 सर, 24. 24. Okay. 24. 24 और कमिंग से। Okay. 24. Okay. SOP is 24. So WPA is H by 3 into SOP. H is 2.5 by 3 into 24. Multiply किया, जो भी आया. $20. 20 square meter. So then this is my answer. This is the answer.
Is this okay with everyone? सर एक बार एसएम की वैल्यू पर फिर से बता दीजिए सर. एसएम की वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लायर सर वो अगर Simpson multiplier is first and Yes. last always 1. Second is always 4. Then 2 4 2 4 की चेन चलेगी बीच में. A chain of 2 4. सर ये फर्स्ट Okay, कॉलम sir. में ऊपर क्या लिखा है? फ्रॉम फॉरवर्ड Breadths from forward in meter. जो क्वेश्चन में Okay, sir. वर्डिंग्स यूज्ड हैं मैं वही वर्डिंग्स को यूज कर रहा हूं. इसको मैं इसका टाइटल जो है सेम रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्डिंग्स. So I'm just copying them from the question. Breadths from forwards. They are nothing but your ordinates. You can even write ordinates from forward. Same thing. मतलब एक ही है. Okay, sir. तो अगर आठ से सर लिखता होता तो आठ से लिखते ही ऐसे ही. तो अगर ये आफ्ट से होता तो फिर मैं लिखता ब्रेथ फ्रॉम आफ्ट. ठीक है. इज दिस ओके? सर ये जो के की वैल्यू सर ये जो के था ये रूल में उसका क्या यूज था सर इसमें? ये h/3. ओके. ये मैंने रूल 1 का फॉर्मूला यूज किया ना. सर किलो जो था 1 किलो की वैल्यू थी. हाँ तो कांस्टेंट जो वो ये 1/3 है ना. यस सर. ओके. किलो इज 1/3. सो तभी वो h/3 बना ना. वो सर मतलब फार्मूला है कि सर कहीं से वो आया ऐसे कुछ? ये फॉर्मूला है. ये रूल नंबर 1 का फॉर्मूला है. ओके. अब जैसे जैसे रूल बदलता जाएगा कि किलो की वैल्यू बदलती जाएगी. किलो की वैल्यू बदलेगी, एसएम बदलेगा. जैसे जैसे हमारे रूल बदलते जाएंगे. एंड रूल्स आर डिपेंडेंट ऑन एन. तो जैसे जैसे एन बदलेंगे वैसे वैसे ये सब कुछ बदलता रहेगा. Now, many times, naval architects, what they do is they don't use breaths. They will give you half breath. If you are given half breath, then you will draw half fish diagram. Sir, Okay. can you please repeat, sir? वो internet खराब हो गया. Many times, what naval architects do is they will give you half breath. Half breath मतलब you'll draw half fish diagram. So these half breaths are called as semi-ordinates. So if semi-ordinates are given to you, you will follow the same procedure. This will give you semi-area function. And the question is asking you water plane area. So what will you do? Multiply by 2. Multiply by. So water plane area will be twice into semi-area. So twice into h/3 into SOP. Whatever is your answer, that will be your water plane area. Is this understood? ये समझ में आया? हाफ फिश का कॉन्सेप्ट. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बड़ा कॉमन होगा. हाफ फिश दिया गया, फुल फिश का पूछ रहा है आपसे. आखिर में आपने लास्ट में ट्वाइस करना है. ठीक है. इज दिस ओके? सर जो सेमी एरिया निकालेंगे उसमें जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एसओपी आ जाएगी ना सर उसके?
हाँ, बट बेसिकली हम लास्ट में 2 लगाएंगे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये आपका हाफ ब्रेथ हो गया, ये सैमसन मल्टीप्लायर हो गया, ये सेमी एरिया फंक्शन हो गया, ये आपका Yes, sir. एसओपी आ गया। WPA will be twice into semi area, twice into h by 3 into Okay, SOP, sir. and twice into 20 is equal to मतलब फिर उसे फार्मूले में मेंशन कर रहे हैं ना कि हम एसओपी के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, लास्ट में फॉर्मूले में करेंगे। ठीक है, इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस ओके, अब चलते Sir, हैं। what is this known as semi? This is half Semi- fish diagram, and what half else fish we call it? diagram, semi ordinates, Semi ordinates. Okay. semi ordinates, also called as half breadth, also called as half breadth. So half breadths or semi ordinates are giving you semi area. Rule number 2. The formula for rule number 2 is 3h by 8 into SOP. So what is the value of K? 3/8. 3 by 8. 3/8 Okay. Okay. The SMs for rule 2. The SMs for rule 2 go something like this. 1, 3, 3, 1. So N क्या होगा? at least 4, sir. 4. Okay. Achha. First and last is always 1. Second and third is always 3, 3. Then you start a chain of 2, 3, 3. The chain is of 2, 3, 3. उसमें chain was of 2, 4. इसमें 2, 3, 3. तो इसका N कितना होगा? 7. 7. फिर से next. First and last always 1. Second and third always 3, 3. Then 2, 3, 3. Then 2, 3, 3. N कितना होगा? 10. 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। अब ये चलता रहेगा ऐसे सीक्वेंस। यहां पे इंटरवल क्या है? +3. ये क्या है? +3. नेक्स्ट वाला +3 यानी कि 13. नेक्स्ट वाला फिर +3 यानी कि 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ. दैट मीन्स आई एम डूइंग even, odd, even, odd, even, odd, so on so forth at an interval of +3, +3, +3. So n is greater than equal to 4, then +3 interval. Running even, odd sequence. ये समझ में आया कि नहीं? सर लेकिन अगर 7 रहता है तो वो रूल नंबर अभी 1 में भी हाँ, अभी उसको अभी साइड में रख लो। अभी उस पर मैं एड्रेस करूंगा, बट पहले ये मैं रूल नंबर 2 को समझ लें पहले। सर सेकंड डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट 3 है, उसके बाद क्या होता है ये बता दोगे प्लीज? सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डिनेट इज 3, 3. मतलब मल्टीप्लाइंग, उसका जो मल्टीप्लायर है वो 3, 3 है। उसके बाद 2, 3, 3 की चेन चल रही है।
जैसे उसमें 24 की चेन चल रही थी, तो 4th, 5th and 6th will be 233. 7th, 8th and 9th will be 233. 10th, 11th and 12th will be 233, and so on so forth. सर एक रूल नंबर 1 में दिस थिंग वाज 24, दैट्स इट नो सर, 24 24 24 24 उसमें 24 का चेन चल रहा था, उसमें द चेन वाज ऑफ 24 24 24. इसमें द चेन इज ऑफ 2333 233 233 233. ओके सर, This is the chain. 2424. ठीक है, is this okay? Have you understood this chain business? So if I want to write the next one, you know there'll be another 233. If I want to write the next one, there'll be another 233. Is it okay? सर वो क्या लिखा है, n greater than equal to 4 plus 3 और क्या n लिखा है greater सर? than equal to 4, comma plus 3 interval, plus 3 का interval चल रहा है, increasing, even odd sequence. ओके सर. So let's come to question number 3. Same exercise. Question number 3. Question number 3. Find the area of a collision bulkhead 12 meter high. So height is 12 meters. So collision bulkhead. The half breadths at equal interval from top are as follows. Half breadths. सेमी ऑर्डिनेट हो जाएगा सर. Correct. Absolutely right. Half breadths at equal interval from top are as follows. 7, 4.8, 2.95, 2. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू 4 ऑफ देम. मैंने क्वेश्चन बदल दिया. 7, 4.8, 2.95 and 2. That's all. These are the ones. So I want you to draw a diagram for it. This is a bulkhead. So we are now talking about cross-sectional area. All right. The height of the bulkhead is given to us. This is a bulkhead. And we're talking about this is the height. There is a certain top to it. So this is the top. So 12 meter high. So and there is a certain bottom. So the bottom is the keel. The top half breadth is 7 meters. So this is 7. This is 7. Okay. This is 7. Now, the next one is 4.8 from top. So this is 4.8. The next is 2.95. This is 2.95. This is the breadth, half breadth. And the last one is 2 meters at the bottom.
This becomes the half bulkhead. Actual bulkhead पूरा है, वो इस side है. The actual bulkhead is like this. But I want to find out only this semi area, and then I will double it. So have you understood the diagram? This is the TT, the top of the tank top. Is the diagram understood by all? Yes, sir. Okay. Let's draw a table. Title of the first column. Half breadth. Correct. Or you can even write semi-ordinates. एक ही मतलब है. From where? From top. सर From ये top. डायग्राम में थोड़ा एक डाउट आ गया था सर. सो हाँ जी बोलो. ये वो समझा ही नहीं सर मैं. कौन सा वाला पार्ट? ये जो लास्ट के 3 है सर 1.65, 1.3 एंड 0, वो हम क्यों नहीं ले रहे सर? वो मैंने क्वेश्चन बदल दिया है. I've changed the question. Okay, sorry. Okay, sir, thanks. I've changed the question to explain rule number 2 to you. Okay, sir, understood. Thank you. I've altered the question. So this is no longer question number 3 now. Question has been changed. Is that okay? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. So semi-ordinates from top. Write it in the same order. 7, 4.8, 2.95, 2. Title of the second column. Simpson multiplier. कौन सा रूल लगाना चाहोगे? So we can use both the rules, rule 1 or rule 2. अरे कितने ऑर्डिनेट्स हैं? Sir, only rule 2 apply. Only for only rule 2. रूल 1 कैसे लगाओगे इसमें? वो 0 भी काउंट कर रहे होंगे शायद, इसलिए बोल रहे हैं. लेकिन 4 ही क्वेश्चन हैं. बदल दिया. मैंने क्वेश्चन बदल n दिया. equals to 4. N is equal to 4 now, please. N is equal to 4 now. So what will be SM? 1331. 1331. Title of the third column. Semi area function. Area function. Negative. Semi area. Semi area function. इनको multiply करो and tell me the value of SOP. $32.25. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir, 32.25. Okay. N is equal to 4. H will be equal to, in this case, height divided by n minus 1. Okay. H will be height divided by n minus 1. 4 meter. 12 divided by 4 minus 1 is equal to 12 divided by 3 is equal to 4 meters. Find out semi area. And therefore find out cross-sectional area. Semi area 48.375, sir. 40. 48.375. 48.3. Okay. And CSA? 96.75. 96.
0.75 मीटर स्क्वायर। सबका सेम आ रहा है? यस सर। यस। ओके, एनी डाउट्स? Any doubts so far? So in this question, supposing I had given you length is 100 meters, then that length is a distractor. I'm just trying to distract you. Agreed? Yes, sir. So in this question, if I give you length, then the length is a distractor because मेरे को h निकालने के लिए तो height चाहिए, because this is my h. ये मेरा h है Because this is cross sectional area, sir. because ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और अगर वही प्रीवियस वाला बोट वाला क्वेश्चन होता और उसमें मैं आपको ड्राफ्ट दे देता, वो ड्राफ्ट डिस्ट्रैक्टर था, because length was required to calculate h in the previous question, because वो WPA वाला क्वेश्चन था। Is that okay? ये कॉमन, Yes, sir. ये बहुत सर कॉमन ट्रिक है। ऐसे कभी कभी आता है। ये बहुत कॉमन है ये ट्रिक। ये दोनों चीजें दे देंगे। उसका मतलब कोई यूज नहीं है मतलब इसका तो। हाँ, डिस्ट्रैक्टर है ना वो, दैट्स अ डिस्ट्रैक्टर, इज जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो इसका कोई मकसद नहीं है इसमें, उसका काम खाली डिस्ट्रैक्ट करना है। सर आंसर में डायग्राम ड्रॉ करना है ऐसे? आंसर में आप हाफ बल्केट बनाओगे और फिर आखिर में ट्वाइस कर दोगे। ठीक है, इज दिस ओके? सर जो 3 वैल्यूज छोड़ दिए क्वेश्चन में, अगर वो लेते तो 7 7, फिर कोई सा भी रूल लगा सकते हैं 1 और 2? फिर दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। फिर कुछ और कहानी आ जाती है, वो मैं अब अगली क्लास में बताऊंगा। कैसे सर, कैसे? ये क्या बोल रहे हो? बिकॉज जो फुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 7 दिए हुए हैं, n = 7 उसमें n = 7 है। सो नाउ n = 7, both Odd. rule 1 and 2 apply. Both rule 1 and 2 will apply. Then 13. That means at interval of +6. Both rule 1 and 2 will apply. Then +6. 19. Both rule 1 and 2 will apply. अब ये +6 की सीरीज शुरू हो गई, तो इन एंड्स में बोथ रूल 1 एंड 2 लगते हैं। जब दोनों रूल 1 एंड 2 लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम लगाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है? रूल 1 will prevail over rule 2, will prevail over rule 3। ये हमारा रूल ऑफ प्रायोरिटी कहता है। तो इसका मतलब आई कम बैक टू माय ओरिजिनल सेल, whenever n is odd, which rule will you use? Number 1 बात बताओ, तो रूल नंबर 1 लगा दोगे बस। ठीक है, इज दैट ओके? मतलब सर अगर दोनों अप्लाई हो रहा है तो नंबर 1 लगा के सॉल्व कर देना है। बस बात खत्म।
ठीक है, इज दैट ओके? मतलब दोनों अगर अप्लाई हो रहे हैं तो ऑड ही आएगा हमेशा, n इज ऑलवेज ऑड, n इज ऑलवेज ऑड, बस फिर नंबर so वन ही रूल नंबर लगेगा। 1, रूल नंबर Yes. 1 ही लगेगा। ठीक है, इज दैट ओके? Yes. सो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। सर ये रूल 3 भी है मैंने। हाँ, अभी आएगा, आगे आएगा, आगे रूल 3 भी आएगा। तो अपने सेकेंड मिनट्स का एक दो फॉर्मूले हैं। एरिया कोएफिशिएंट CW, that is equal to water plane area divided by length into maximum breadth. Then TPC, salt water, is equal to 1.2025 into water plane area एरिया वाटर upon 100. ठीक है, then fresh water allowance W upon 40 TPC. So ये हमारे सेकेंड मिनट्स वाले फॉर्मूले हैं जो कि जिनका एप्लीकेशन अब आएगा इस एक्सरसाइज में। सो फॉर होमवर्क आई वांट यू टू डू एक्सरसाइज 16। I want you to do exercise 16. Don't do, excepting question number 7. I've not yet done that with you. You can do all the remaining questions 1 to 10.